Good morning, everyone. Hope you all are doing good. This is the last session of the week, and today we have Devin sir with us. Devin sir, can you hear me? Yes, Sanuj, I can hear you. Good morning. Good morning. We'll start the session in next 2 minutes. Meanwhile, you can settle down, share the screen, turn on your camera. Sure, Anuj, I'll just give me 1 minute max. I'll just set up my screen. Sure, sir. So, guys, we'll start with the market outlook, important events for next week. Then we'll move towards the trade for the day. We'll try to share some intraday and CDI trades. And if any strategy trade possible for the indices, we'll give you a quick overview of the indices, support, resistance as well. And then we'll take up some stock queries. So please feel free to drop your queries one by one. We'll be happy to take them up. And अगर अभी आपकी queries हम नहीं ले पा रहे हैं, then please share them on Stockomo. We'll be happy to reply there. So Devin sir, over to you. Yes, please, Anuj. We'll start the session. We'll be covering Nifty first, then Bank Nifty. Definitely, we'll try to give some intraday trades. There are some of the stocks on my radar. So definitely we'll be talking about that as well. And also we'll try to take some queries as well. As of now, Nifty, we can, I hope my screen is visible. So we will start with Nifty, and Nifty is currently trading at 23,100 odd levels. And if we see the intraday charts, after opening, we have seen a small gap down opening today, but after the global market sell off yesterday, yesterday US markets were down by more than 5 to 6%. Nasdaq was down by 6%. Dow was down by around 4 to 5%. S&P 500 was down by 5%. So overall, there was a broader sell-off into the global markets due to the tariff war and tariff kind of a thing which is imposed by Trump. So that is one of the news because of which markets are trading volatile. India is comparatively trading well. Trump has imposed the tariff of 27% on India. It was 26 prior, but there was some error, and when the paper was released by Trump, it was 27% written over there. So it is 27% tariff on India. Overall, I think compared to other countries, the tariff imposed is comparatively lower on India, which is positive for the Indian markets as well as for the Indian economy. So overall, we have seen that Indian markets are not falling the way global markets, including US, is falling. If we see China, it is falling around 4 to 5% from last 2 to 3 trading sessions, right? So overall, compared to all other markets, India is comparatively trading well. It has shown a relative strength compared to other global markets. So overall, we have seen that Nifty is holding its major support of 23,000. Today, we have seen that after a small gap down opening, it went down, but again, it has hold its important and crucial psychological as well as kind of an important support level of 23,000, and we have seen a bounce back of around 100 points from that particular levels. There will be volatility due to the global market sell-off as well as Indian market strength. There are FIs who are continuously selling after buying for 2 to 3 trading sessions. So the buying figure was very low, and they are continuously selling, whereas DIS, we have seen that they are continuously buying. Right, so there will be some volatility due to all this global news as well as all these impacts into the market. But comparatively, we will be holding our levels. 23,000 is a strong support. Below that, 22,800 will act as a very major support for the markets. We'll say that if Nifty goes below 22,800, then only there will be some kind of a more bearishness into the market. Till then, these are just the pullbacks from the higher levels after moving well.
and I think 22,800 will act as a major support for the markets. On the higher side, once we cross 23,333, then we can see a good up move into the markets towards 23,500, 23,800 levels as well. But the major resistance is around 23,333, 23,350 levels. So until and unless it holds above that, will be waiting for the any decisive move in the markets. And that's it about Nifty. I think on the higher side 23,333, on the lower side 23,000, the important support and the major support 22,800. So I hope I've made clear the levels of Nifty as well as Bank Nifty. Now we'll cover Bank Nifty as well. Bank Nifty is comparatively trading very stronger. In fact, it is positive by 250 points today. On the daily chart, we can see that there is a kind of consolidation happened over here, and this is a pole. So we can consider this as a flag and pole pattern, and the Bank Nifty is trying an attempt to cross and give a breakout of this particular level. The resistance on the higher side is around 52,000 levels. Once it crosses and holds above 52,000 levels, I think Bank Nifty can lead the rally, and Bank Nifty can outperform compared to Nifty. And I think on the higher side, 53,600, 650 levels are the levels where Bank Nifty can lead. So I think just a small resistance is around 52,000. It is up by 0.5%. There is no we can say there is no impact of global markets or the tariff war on the banking stocks, and Bank Nifty is performing well. So I think this flag and pole pattern can give a good up move, and it can move towards 53,500, 700 levels as well. So these are the levels one should look at, and I think banking stocks we have been recommending since long. So banking stocks are doing well. Last 3 4 trading session we have seen that PSU banking stocks has also come up with the expectations that the coming result season will be more good and more beneficial for the banking stocks. So definitely PSU banking stocks have also came up. We have seen some of the mid cap private sector banks as well, like Bandhan Bank and IDFC First Bank. These are the banks which have also shown a good up move from yesterday as well as from last 2 3 trading sessions. So I think overall there is there is no impact of global market on Bank Nifty, and Bank Nifty is performing well, and it is about to outperform Nifty. As far as Bank Nifty is concerned, on the lower side there is a strong support around 51,000, 50,800. That is a zone where Bank Nifty has a strong support. We'll see some kind of a profit booking or some kind of bearishness only below 50,800 levels. And on the higher side, once it crosses 52,000, we can see a good up move and good rally coming into the Bank Nifty as well as banking stock. So this is all about Nifty as well as Bank Nifty. Today we have the last session of the week, and we'll be going in the next week, and we have expiry of Sensex on Tuesday. So definitely, if we consider Sensex, then it is currently trading around 76,000 levels. And I think once it holds above 76,200 levels or 300, 200, 300 levels, even Sensex can give a good up move. More or less, Nifty and Sensex moves together. So comparatively, Bank Nifty will outperform to Nifty as well as Sensex. So I hope I've solved the query of Nifty, Bank Nifty. We have taken the levels of Nifty as well as Bank Nifty and Sensex as well. So now we can go further with some stock specific move. We have seen that IT sector is not performing well, which is creating pressure on Nifty. So निफ्टी पे आईटी सेक्टर जो है वो काफी प्रेशर दे रहा है. हम लोग निफ्टी आईटी सेक्टर का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं. एक मेजर ब्रेकडाउन कल के दिन में देखने मिला. सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक डेफिनेटली आता है, लेकिन वापस से सेल ऑफ देखने मिल रहा है. आईटी सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो वन शुड अवॉइड बाइंग आईटी स्टॉक्स. Definitely some of these stocks are trading at a good valuation, but until and unless there is a
there is no up move into the market until and unless the trend is not changing from bearish to bullish. Till then, one should wait to buy IT stocks, and one can definitely enter into the banking stocks, as we have discussed that bank nifty and banking stocks will perform well. IT stocks, definitely those who are looking for long term, definitely one can wait, and one can wait for a reversal once the trend changes from bearish to bullish. I think that will be the best time to enter IT stocks for medium to long term as well. But till now, one should wait, and as we say, trend is our friend, so we should wait for trend to reverse for the IT stocks as well. So I hope we have cleared the IT index as well. Banking index we have already cleared, and again, there is one more sector, metal sector. We have seen that this is the metal sector, and we have seen that it is showing some kind of a profit booking, and it is moving downwards as it is linked to the global markets, and there is a sell off into the global markets. I think metal sector will wait and watch. There can be a consolidation into the metal sector as well. Stock specific move can happen. Some weaker stocks can show some kind of a weakness into the market, so one should wait to enter metal stocks as well. Banking, we have seen that that is the good sector, and NBFC stocks also. Even pharma, definitely there was a good news on pharma that there will be no tariff imposed on the pharma stocks. Overall, we have seen that pharma counters and pharma stocks perform well in the month of April. So definitely pharma stocks are good, but this is the pharma index, and on the higher side we can see that 22,000 level is the resistance, and we have seen a sell off yesterday from that particular level only. So I think one should wait into pharma as well. I think once it crosses 22,000 levels in the pharma sector, the pharma stocks and sector can perform well. Till then, there will be some kind of a pressure on the lower side. It is approaching the support of 20,600 levels. So if it holds that particular levels, and if we see kind of a reversal, then the pharma stocks will be looking good. Till then, one should definitely wait. Today, it is a major day because yesterday we have seen a major fall into the US markets, and it was the major fall after 2020, which was a COVID crash, right? So I think that was the thing, and one should wait for the sector specific move. As far as Bank Nifty and NBFC stocks are concerned, they are looking well, and one should enter that particular counter. We'll take some queries. There are some stocks on my radar which we can play for intraday. I'll definitely share those particular stocks. But till then, we can take some queries. Anuj, if you're there, can we take some queries? Yes, sir, definitely. Yeah, sure. So Anuj, we'll take some 2-3 queries. I'll try to give the intraday calls as well. And even if I have any particular strategy, we'll try to share that as well. The Tata Motors. Okay, so auto stocks again, we have seen that there was a tariff news on the auto and auto ancillary stocks, and we have seen that auto stocks are not performing well. I think Tata Motors have had shown kind of a bounce back from the lower levels, but again it faced a resistance around 725, and after that we have seen a kind of a sell off from that particular levels, and after that the news flow that there will be the tariff imposed by US on the auto stocks, I mean auto industry. And I think Tata Motors is one of the exporter, the company of Tata Motors, which is Jaguar and Land Rover, normally exports to US as well as European countries. So that is the major issue with this particular counter. इसीलिए स्टॉक में लगातार सेल ऑफ हम लोग देख रहे हैं. ऑन द लोअर साइड अगर सपोर्ट की बात करूं, 605 610 के आसपास एक सपोर्ट है. अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर से स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ जाएगा और थोड़ा सा और नीचे जा सकता है. तो until and unless 605 levels is intact, I think one should wait. If it closes and breaches that particular level, तो फिर नीचे जा सकता है. ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करूं, 675 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. 675 680 लेवल्स क्रॉस करने के बाद अगर होल्ड करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है. So till then, it can trade into a range, and one should wait and watch.
and I think the shorting opportunity can be there if it breaks 605 levels. Sir, Asian Paints. I think Asian Paints, yesterday we have seen that there was a sell-off into crude prices. And after that, we have seen Asian Paints is trying to hold its support levels. There is a kind of a bounce back on lower levels, but I think it is trying to hold the immediate support levels right now. On the lower side, 2300, a strong support level of 50 and 20-day exponential moving average मीटिंग ओवर देयर. सो आई थिंक जब तक ये स्टॉक 2300 के नीचे नहीं जाता तब तक होल्ड करना चाहिए. 2000 ऊपर में रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस है क्योंकि स्टॉक काफी हायर लेवल से नीचे आया है और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना के नीचे आया था. तो आई थिंक ये स्टॉक जब तक ऊपर में 2360 370 के लेवल्स नहीं निकलता तब तक वेट करना चाहिए. इसके ऊपर जाएगा तो 2420 और फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस आ सकते हैं, तो उसके ऊपर जाने के बाद बाय करना चाहिए. लेकिन हर रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए. सो ओवरऑल स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल में हम लोग ने देखा है कि एक सेल ऑफ आया, क्रूड ऑयल नीचे था और दिस इज वन ऑफ द काउंटर पेंट स्टॉक ऐसा है जो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं क्रूड ऑयल को, और इसीलिए ये मेजर बेनिफिशियर रहेगा. जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होते हैं ऊपर में 2360, आई थिंक इट कैन गिव अ गुड अप मूव, तो वहां पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. ऑन द लोअर साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2300 के आसपास. So Cochin Shipyard. आई थिंक आज एक न्यूज आया था ऑन मजगांव डॉक, राइट. सो डिफेंस स्टॉक में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला है. कोचिन शिपयार्ड का भी हम लोग स्टॉक चार्ट्स देख लेते हैं. अगेन कोचिन शिपयार्ड में भी थोड़ा सा एक साइडवेज मूव देखने मिल रहा है. कल के दिन में एक अच्छा अटेम्प्ट था ऊपर में 1480 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है. वापस से स्टॉक रेंज में है. देयर इज अ न्यूज दैट मजगांव डॉक, इन मजगांव डॉक देयर विल बी एन ओएफएस कंडक्टेड बाय the government of India. They will be selling the stake, and the price they are considering is 8% below the current market price. तो अगर 8% नीचे का अगर वो प्राइस पे सेल करने जा रहे हैं तो हायर लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे, एंड दैट वाज द न्यूज. एंड इसकी वजह से सारे जो डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स है वो थोड़ा सा नीचे आए. कोचिन शिपयार्ड अभी भी सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर रहा है. तो आई थिंक अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है स्टॉक तो 1360 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले. 1360 के नीचे जाता है तो एक यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है और फिर स्टॉक में थोड़ा सा और वीकनेस बढ़ सकता है. ऑन द हायर साइड आई थिंक 1465 1470 एक रेजिस्टेंस है. 1480 के आसपास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. तो आई थिंक 1475 1480 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो एक फर्दर अप मूव आ सकता है, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो. टिल देन थोड़ा सा रेंज में स्टॉक रह सकता है. So that is the view on the Cochin Shipyard as well as the defense stocks. So GRAC. Again, this is one of the counter related to डिफेंस, गार्डन रिच शिपिंग. अगेन ये स्टॉक में सेम स्टोरी है, 3.5-4% के आसपास नीचे. डिफेंस रिलेटेड सारे काउंटर्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है और उसी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट कल हो सकता था. आज एक अगर फर्दर फॉलो अप बाइंग आ जाता तो पॉसिबली ये ब्रेकआउट्स हो जाते, लेकिन जो न्यूज फ्लो है उसके बाद ये फिर से रेंज में आ गए. अगर रेंज का लोअर लेवल ब्रेक होता है तो आई थिंक ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा वीकनेस बढ़ सकता है. ऑन द लोअर साइड 1645 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस बढ़ सकता है. टिल देन इट कैन ट्रेड इनटू अ रेंज. ऑन द हायर साइड कल के हाई के आसपास 1780 1770 बेसिकली 1770 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक वेट करना चाहिए. जैसे ही 1770 के ऊपर जाएगा स्टॉक तो बैड न्यूज जो है फैक्टर्ड इन हो जाएगी और एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल सकता है. सो टिल देन अवॉइड करना चाहिए. ऑन द हायर साइड 1770 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. On the lower side, it is trading very close to the support of 1645 1650 levels. So wait करना चाहिए.
Anuj, I think you are on mute. Can you please The CLSEL. CLSEL? Shamanlal, we do not track this particular counter, but yes, it is trading into a range as far as charts are concerned. On the lower side, strong support is at 300. On the higher side, resistance is around 315, and it is trading in this particular range. ये रेंज के बाहर निकलेगा 315 के ऊपर तो फिर से 335 तक जा सकता है. एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां पे है. अगर कोई होल्ड कर रहा है, लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली 335 के आसपास आए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. अगर हायर लेवल्स पे अगर किसी ने होल्ड किया है तो स्टॉप लॉस रखे 300 का, और जैसे ही ये लेवल्स 315 के लेवल्स क्रॉस होते हैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए. 335 के ऊपर निकलता है तो वापस से एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखिए, और ऊपर के मूव में ट्राई टू एग्जिट वेरी क्लोज टू योर कॉस्ट और इन सब प्रॉफिट्स. Sir, any conviction delivery idea for short term PSU or NBFC? आई थिंक पीएसयू में पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा, इफ वी टेक दिस पर्टिकुलर काउंटर, सो बैंक ऑफ बड़ौदा में कल के दिन में भी एक अच्छा मूव देखा. आज भी थोड़ा सा अच्छा मूव दिखाया था. फ्लैट चल रहा है स्टॉक, मार्केट के साथ थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है. लेकिन पीएसयू काउंटर्स में अगर देख रहे हैं तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, अगर हम लोग लीडर की बात करें पीएसयू बैंकिंग में एसबीआई, तो ये भी एक काफी अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है. एंड आई थिंक ये भी एक काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है कंसोलिडेशन का, जो 785 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा. यहाँ से 10 रुपए ऊपर एक लेवल है रेजिस्टेंस का, वो अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक इसमें भी काफी अच्छा मूव आ सकता है. तो पीएसयू बैंक में अगर आपको देखना है तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक आप देख सकते हैं. आई थिंक इंडियन बैंक, ये भी एक अच्छा काउंटर है. ये भी काफी साइडवेज अभी ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ही है. ऊपर में ये रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 555 556 लेवल. 556 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तो ये स्टॉक फिर से एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 600 लेवल्स एज वेल, 590 600 के आसपास. तो आई थिंक ये स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए. पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं. गिरते मार्केट में ज्यादा गिर नहीं रहे, और कल के दिन में जो बाउंस आया उसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का था. बैंक निफ्टी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. तो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में आप ध्यान दे सकते हैं. Guys, for the people who are asking queries around natural gas and crude oil, this is not the right session. We have a separate session for queries. You can ask your queries there. Sir, PCBL bought at 421. फोर 421 आई थिंक थोड़ा सा हायर लेवल्स पे परचेस किया हुआ है. 416 के आसपास चल रहा है. नीचे में सपोर्ट लेवल्स की बात कर लो तो आई थिंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 410 के आसपास है. अगर यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है. अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बाय किया है 410 का एक स्टॉप लॉस रखे. ऊपर में एक रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 440 लेवल्स. 440 क्रॉस होती है एक अच्छा अप मूव इसमें फिर से एक बार देखने मिल सकता है, which can go towards 470 levels as well. 470 तक जा सकता है. तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा वीक नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है. आपका बाइंग प्राइस भी एक रेंज में ही है. आई थिंक ऊपर में 440 के लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए. वो निकलने के बाद एक अच्छा अप मूव स्टॉक में देखने मिल सकता है. बिफोर गोइंग फर्दर आई थिंक एक बीटीएसटी, आई मीन सॉरी, देयर इज वन इंट्राडे कॉल विच इज ऑन माय रडार, जिससे हम लोग ने बात किया कि आईटी स्टॉक्स में काफी ज्यादा हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं. तो हम लोग आईटी स्टॉक्स में ही देख वेरी क्लोज टू 13,000. तो आई थिंक 13,000 के टारगेट के लिए स्टॉक में थोड़ा सेल ऑफ कर सकते हैं. छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा टारगेट है, रीजन बिंग इंट्राडे ट्रेड है. तो आई थिंक डिक्सन कैन बी सोल्ड फॉर इंट्राडे, डिक्सन फ्यूचर्स. Got it, sir.
And this will be the last query for the day. Oro Pharma at current market price. अगेन हम लोग ने फार्मा स्टॉक्स डिस्कस किए डेफिनेटली, और फार्मा पे भी हम लोग देख सकते हैं कि आई थिंक स्टॉक ने कल के दिन में एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिया था, उसके ऊपर ओपन हुआ था, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ देखा। आज एक सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किया हुआ है, इमीडिएट 112 ऊपर से प्रेशर है स्टॉक में। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं बात करूं 1050 1045 के आसपास है। अगर ये लेवल्स के आसपास आता है और वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर वीकनेस स्टॉक में देखने मिल सकती है। कल के दिन में जो वॉल्यूम दिख रहा है, आई थिंक मेजर प्रॉफिट बुकिंग के वॉल्यूम्स है, काफी ज्यादा इस पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और ओवरऑल फार्मा सेक्टर हम लोग जैसे बात किया हम लोग ने, कि फार्मा सेक्टर में भी कल के दिन में गैप अप के बाद एक सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो आई थिंक ऑन द लोअर साइड 1040 1050 के आसपास जो सपोर्ट है, अगर वो लेवल्स होल्ड करता है तो अच्छी बात है, एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा वीकनेस बढ़ सकता है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस 1220 के को क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो एक अच्छा अपमूव इसमें देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल थोड़ा सा एक रेंज में, काफी बड़ी रेंज है, लेकिन ये लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए। So guys, that will be all for today's morning session. Thank you everyone for joining in. Thank you, Deven sir. See you again at Thank you, 2:30. Anas. Thank you, and thank you everyone for joining. Thank you.